We'll discuss one by one very briefly. Uh, I will not go into the detail, but in this 1 hour, I will give you a brief summary and fundamental understanding, so that while reading this IGNOU material, you can understand what should you have to read and what are the things you should concern. The first is the foundation of Indian nationalism, is the chapter which basically about how and the nature of nationalism emerging in Indian context. We'll discuss about this formative phases and 50s, 60s, how it emerging among the intellectual, the new intelligentsia of India, Bengali Bhadralok or Madras province or Bengal provinces. The second stage of our national consciousness is economic nationalism. Uh, in the context of Dadabhai Naroji or Ramesh Chandra Dutt, Bal Gangadhar Tilak, the writer, the economic historians who started writing about the drain of wealth, economic exploitation of the Britisher, the demerits of colonial expansion, and how India is suffering from this alien rule, the British rules, and how it exploiting its very sense, how it destroying its economy. It was limited to this kind of nationalism, was limited to economic nationalism. The other chapter, the next chapter is resistance to colonialism in intellectual and social sphere. So while targeting this ideology called colonialism, you just don't need to explain this economic exploitation. That is not enough. There are other sphere means society, tradition, culture. Uh, uh, Please, okay. Please mute yourself and don't share your screens because it's a class going on. Please be careful. Mute yourself and don't share your screen. Okay. And the other sphere like education, society, like religious reform movement of Raja Ram Mohan Rai, Bamboo Samaj, the the things by the um, Rabindranath Tagore or Tagore family or Vivekananda. You can see this other sphere of resistance, the intellectual, the social, cultural. These things are will concern in this part of chapter. The last is toward radical and mass politics. Here we will discuss about the extremist, the revolutionary phase of Indian nationalism, how this nationalism is this increasing the feeling, and it became uh, a very extremist in nature. They started, some of the group have started adopting this radical behavior of revolutionaries to reject the alien rule, to challenge the alien rule. The the first section is the foundation of nationalism in India. Now, how nationalism in India is grown, like intellectual and political activity during the second half of 19th century prepared the ground for the rise of organized nationalism. Now, what is this intellectual and political activity? How it emerging, how it changing this the atmosphere, the climate of this new intelligentsia. These are the creation of the provincial association. This is a short summary of your unit, that the things which happen and that reflect in this the nature of the nationalism. The formation of the various provincial association, Bengal, Madras. These provinces has their own political association to raise their voice for the people, to raise their voice to demand of the people. These were the small organization before the emergence of Indian National Congress. Indian National Congress emerged in 1885, and this is the formative phase. We are talking about 1850s and 60s.
The other dimension are racist inclination of the colonial regime, legacy of the 1857 revolt or popular uprisings, uprising like Paika rebellion, Santhal rebellion, Munda rebellion, other peasant and traveling like Indigo, all these revolts and rebellion, and finally 1857 revolt were also the factor responsible for growth of this consciousness among the Indian that we have to struggle again for our independence. We have to struggle for our demand. We have to raise our voices for any kind of demand. Though these were the failures of failure in the sense of that this revolt or uprising, peasant movement, tribal uprising, they were successfully, ruthlessly suppressed by the Britishers, and they own these all these regions. But by winning also, there you can't change the pages of history. Means it happened, it happened. Uh, you can't change, you can't turn the pages of history, and you can't make it in a reverse order. So the effect of all these uprisings was unavoidable. You can't avoid it. The people, the British, sir, even they own, they couldn't avoid this formation. The this is called the process of building a nation, that people started realizing that we can also demand. Every small community, large community, you will see this uprising, the natures of uprising. You can read the chapter peasant and tribal movement written in the freedom struggle book by Bipan Chandra. That is the best chapter to understand this. Otherwise you have a Google your ignu material, which also they have a separate blog called peasant and tribal uprising. So you will see these natures, that how one after another, smaller territory, smaller tribal kingdom, smaller tribal region and peasants, they are demanding, they are challenging this British authority, some smartly, some very stupidly, but it was there. And finally you have 1857 revolt, and some nationalist historian called it the first war of independence, even though some reject it. But so far your consciousness is concerned, so far the impact is concerned, it was huge. The impact in the intelligentsia of the Indians, and you can see through the various stages we discussed that. Then legacy of this popular revolt was that British rule, for example, your famines, 1860, the Odisha famine or Bengal Odisha province, the famines, you will see Bihar, there was another province in famines in Madras area. So these regular famines were the causes of the dissatisfaction of the administrative policy of Britishers, because this was not a natural made like it was in the medieval or early medieval time. It was human made famines. It was created, the scarcity of the food, the scarcity of the available resources was man made, created by the British and British administrative officers, and the taxation policy, land revenue policy. Uh, and they were these region that for example, the small example you will take, that is the Odisha, how this 1860 famine is creating the foundation of the modern Odisha. And after the then Sir T.D. Revensa started uh, thinking about Odisha, press were established, history writing of Odisha history writing was started by some of the intellectuals, and Revensa College was established. New intelligentsia was emerging within this issue. So it happened in India. You can take one example to understand the all over Indian context. Then new land revenue policy, commercialization, agriculture, drain of wealth, deindustrialization. These are the aspect of colonialism. This is a separate chapter. You will find this in the administrative policy block of Britishers. There is a separate block of IGNU material, and you will find that what are the nature of British rule, and these are the nature, like this land revenue policy, temporary settlement before permanent settlement, and also the permanent settlement which was introduced in 93 1793 by the Cornwallis.
And all this revenue system was has their had their only one concept, that how to exploit more and more revenue from the with people, land revenue from the people. And the second is very important, that is called commercialization of agriculture. You know that India is a traditional country. Here, this commercialization word was not so wide at the time. New plantation like indigo, then later on opium also came into existence, sugarcane, all this crop, the cash crop, where the Britishers forced Indian peasant to cultivate these crop. The land rights, the you have a land, for example, you have a land, you have a piece of land, you have every right to cultivate whatever you want. But during that time, Britishers made these policies that you have to cultivate this cash crop. You can't cultivate rice or wheat or these things according to the demand in the colonial states, cosmopolitan state like the European state, this metropolis state. According to their demand, they started implementing, they started imposing that demand on the Indian peasant. जो यूरोप में डिमांड होगा उसको यहाँ पर they will put forward. Like the sugarcane, when American war of, I'm giving you one example, like sugarcane plantation. When American war of independence was going on, at that time there was a scarcity of sugar in the Europe. Now they forced Indian peasant to cultivate more and more sugar in the Deccan region. And when the war over and the prices were very degraded in Europe because of the large exportation, large of sugar, they shut down all the factories in the India. They didn't buy the sugar cane from the field, and because of that, the farmer, the peasant, they faces these losses, the great losses of these productions, because no one was there to buy this product, no one there to collect this product for the factory. Yes, ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଜଣେ ପଢୁଛନ୍ତି। Please mute yourself. Please Yes, mute yourself. Bandita Barik, please mute yourself. It's quite disturbing. This is the one example. There are other example, like you can go through the Indigo Revolt, the nature of the Indigo Revolt, where the indigo planters, there were Lathia, there were contractors under the British influence and capitalist. They forced this peasant to cultivate more and more indigo. Now the things with the cash crop is that once you cultivate it, it barren the land for 2 or 3 years. That is the nature of this cash crop. Now, to cultivate this cash crop, they didn't have the money. So this local bank, the banks of from these British officials, they 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 made this provision for the farmers, that you take this loan for us for this cultivation of the cash crop, and the interest rate was also on the behalf of this, on the favor of these Britishers. So the farmer who is cultivating this cash crop, he can't eat it, he can't sell it, and the interest rate he have to pay to the bank also. He can't sell in his own price, he have to sell according to these contractors, and he can't directly sell in the companies also. And these are the things while these peasants suffered a lot. If a person's expenditure is, for example, if a person investing 10 rupees, he's almost getting 2 rupees in return, uh, uh, while selling these things. And these Lathiats were the collector of the money.
when the peasants were unable to pay the money, the Lathiat were used to vote there, they burned their villages. This is the part of Indigo revolt. So the commercialization of agriculture, drain of wealth. By drain of wealth is the policy which you can associate with the second stage of colonialism, where they started levied the heavy taxes on these on the product which was used to put in India. One thing about this nature of trade policy is that they never allowed Indian cotton or Indian goods for the selling in the British market. One thing you should remember that it was a outdated information that they वो यहाँ से ले जाते थे और वहाँ का जो बनाया हुआ मैन्युफैक्चरिंग गुड यहाँ लाते थे, ऐसा नहीं होता. They have their own production, agricultural production also. They never allowed the Indian product to sell in the British market. They allowed it to sell in the European countries like the France, Germany, and other, so that Indian product can compete with the other rivalry European nation, because Indian product was quite ମ୍ୟାମ୍ fine. ଟିକେ ମ୍ୟାମ୍ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝାଇଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ବୁଝି ହେତା ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ Okay, mobile. Some are because this is a IGNU platform. That's why I'm talking English, so that Hindi, English, Odia, everyone can become comfortable. And I don't know. ତମେ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବ. So ନାଇଁ ତ ମ୍ୟାମ୍ ହିନ୍ଦୀରେ କହିଲେ ବି ଟିକେ ବେଶୀ ବୁଝି ହେତା. ଇଂଲିଶରେ okay. ଟିକେ ସ୍ପିଡ୍ ହେଇଯାଉଛି ତ ସେଥିଲାଗି ଟିକେ ବୁଝିବାର ଲାଗି ଟିକେ ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି କମର୍ସିଆଲାଇଜେସନ ଅଫ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଯୋଉଟା କି ନେଚର ହଉଛି ବ୍ରିଟିଶ ପଲିସିର, ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ peasant କୁ let me tell in Hindi, at least some of the Hindi student can understand that. So ठीक है. this peasants लोगों को वो लोग फोर्स करते थे कि वो तुम्हारे उनके ही बैंक से लोन ले, वहां पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करे, कैश क्रॉप, नॉट द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बट द कैश क्रॉप. एंड उसके बाद वो उन्हीं के फैक्ट्री में सेल करे, उनको ही उनके जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे उनको सेल करे. किस प्राइस पे? वो जो प्राइस फिक्स करेंगे, नॉट वो जो फार्मर फिक्स करेगा, वो उनके प्राइस से फिक्स. इंटरेस्ट रेट जो बैंक का होता था वो भी वो फिक्स करेंगे, एंड वो जो सेल करेंगे वो उनके रेट से सेल करेंगे. नाउ जो प्रोडक्ट होगा वो फिर बाहर जाएगा, उसके लिए भी इंडियन लोग ही टैक्स देंगे, वो जो सेलिंग करेंगे. तो दिस इज द ट्रेड पॉलिसी. This is coming in the trade policy that this whatever product was going, ये जो जाता था प्रोडक्ट इंडिया से, जितना भी प्रोडक्ट जाता था, ये वो लोग ब्रिटेन में अलाउ नहीं करते थे, क्योंकि ये फाइन प्रोडक्ट होता था. इंडिया का कॉटन हुआ कि ओपियम हुआ कि जो भी हुआ, टी हुआ, इंडिगो हुआ, इसको वो लोग यूरोपियन कंट्रीज लोग में वहां पर भेजते थे, ताकि वो और जो कॉलोनी है लाइक स्पेन का है, पोर्तुगल का है, आपका जर्मनी का है, उनके मार्केट को इंडिया का प्रोडक्ट कॉम्पीट कर सके. जब ये जाता था, दे स्टार्टेड लेवी टैक्सेस, हैवी टैक्सेस ऑन दीज प्रोडक्ट्स, कि वो पहले आएगा इंडिया से, जब बाहर जाएगा उसके लिए टैक्स, वहां से ब्रिटेन जाएगा, ब्रिटेन में वो लाइसेंस्ड होगा, फिर वहां से जाके यूरोप में जाएगा. सो देयर आर थ्री टैक्सेस, थ्री extra taxes the Indian merchants have to pay for the selling their product. And ये जो this is the nature of the drain of wealth. It was not direct कि वो बेच देते थे ले आते थे. You have to understand the nature of these trade policies. And और जो ब्रिटिश से जो प्रोडक्ट आता था, माने ब्रिटेन का मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट लाइक मैनचेस्टर क्लॉथ्स, और जो रेलवे का जो आयरन का और जो कोल, ऑल दीज थिंग्स, उसमें 0% का भी टैक्स नहीं लगता था. तो उससे क्या हुआ? दैट इज द टाइम ऑफ सेकेंड कॉलोनियलिज्म कॉल्ड फ्री ट्रेड, जिसमें दे ओपन द डोर ऑफ ऑल द कंपनीज इन द ब्रिटेन टू इन्वेस्ट इन इंडिया. एक एग्जाम्पल दिया गया है, देयर इज एग्जाम्पल इन द बुक रिटन दैट रेलवे कंपनीज को लीज दिया गया 100 ईयर का. एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसको लीज दिया गया दैट यू विल create this railway line in India, and whatever money, जो भी एक्सपेंडिचर होगा वो ब्रिटेन देगा उनको. 100 ईयर के बाद वो कंपनी जो भी कमाई होगा उसका, जो भी इनकम आएगा, वो इंडिया में वो इनकम अपने पास रखेंगे. 100 ईयर के बाद, 100 ईयर ठीक कंप्लीट होने से पहले 99 डे में वो उसको
ब्रिटेन को वापस सेल कर देंगे, ब्रिटेन अथॉरिटी को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन को वापस सेल कर देंगे वो अपना कॉन्ट्रैक्ट को। कितने रुपए में? वो जितना में वो मैन्युफैक्चरिंग हुआ था। So that was the tactics. This is the tactics of capitalist, not the government. Here the government is the just the instrument. You have to see the tactics of this capitalist, this industrialist, the companies like East India Company, Manchester's, all these company, how they started exploiting through the economy, through the investment, and through the foreign this free trade policy. So this rebellion were so these things were came into limelight after this revolt and the Santhal uprising. You know that the nature peasant movement हो रहा है, Santhal uprising हो रहा है, like I've given you example, कैसे उनका डिमांड होने से वो यहाँ पर कल्टीवेशन कर रहे हैं, जब उनका डिमांड खत्म हो जा रहा है या प्राइस वहां पर यूरोप में कम जा रहा है तो वहां पर यहाँ पर वो बंद कर दे रहे हैं, दे आर नॉट बाइंग दैट प्रोडक्ट। नाउ जो ये कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप को एक इंडियन पीजेंट क्या करेगा? ही कांट यूज इट, ही कांट मैन्युफैक्चर इट, उनके पास राइट नहीं था वो मैन्युफैक्चरिंग कर सके, मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ ये लोग करेंगे। सो दीज थिंग्स वेर रेस्पॉन्सिबल, दे कांट पे बैक दीज लोन्स, जो लोन वो बैंक से लिए उसको वो पे नहीं कर पाए, दैट बिकेम, उनकी वजह से डेप्थ होता गया। दैट इज द रीजन व्हाई दिस ट्रेडिशनल जमींदार वर रिप्लेस्ड बाय द न्यू जमींदार। जितने भी ओल्ड जमींदार थे, छोटे छोटे जमींदार थे, because of this inability to pay the taxes, they forced to sell their land. The jamidar were replaced by the new jamidar. ये जो new jamidar थे, they were not they didn't had this bonding with the peasants. जो traditional जमींदार थे उनका एक bonding था, वो लोग 100 साल 150 साल से थे, पुराने लोग थे, राजा medieval टाइम से थे, and they have this intimacy with the peasant. But these new jamidars were the capitalist in nature. They were the large land owners, जैसे कि उड़ीसा का प्राय लैंड आपका बंगाली जमींदार स्लोगन, जो एशोकेटी जमींदार स्लोगन, दे यूज्ड टू बाय दिस ऑल दिस लैंड। So this traditional zamindars replaced by the new zamindars who were much exploitative in nature, and they started collecting money on their own. So this is the nature of consolidation of agriculture, drain of wealth, deindustrialization, and uh, for this region, the Sannyasi and Fakir rebellion, for example, or the peasant and tribal movement happening, and 1857 revolt also happening, and how that they are affecting the our consciousness. कि हाँ हमारा भी हमारा we can also fight for our demand. If you will not fight, how you will live with that? So 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 this is the Great Revolt of 1857 and indigo cultivator. I have already tell you all these things. Now the second aspect of nationalism, the growth of nationalism is new intelligentsia in Bengal. Bengal province में नया intelligentsia होना, only not only in Bengal but also Bengal, Madras and Bombay, all these province that the intellectuals like Bankim Chandra Chatterjee, Ramesh Chandra Dutt, Surendranath Banerjee, they extended their support to these tenants and peasants. This 1870 peasant in Pune, Ahmednagar was successful. Solapur, Satara, Maharashtra gave a call for a social boycott of moneylender and resistance, turned into agrarian revolt. Peasant, ये जो Deccan Agriculture Relief Act है 1879 का, that was a successful revolt where they put forward their demand, and that was a successful revolt. It was not a failure like other revolts. So that some of the examples are I have given you. That is in your blog. You can read that. That how in the subsequent phases, when this new intelligentsia are supporting this tribal and peasant movement, peasant movement basically, how that becoming successful um, intellectual awakening. This is another factor uh, with the establishment of the new institutions in India, जैसे कि कटक का आपका रेवेंसा हुआ। वैसे जब पहली बार फर्स्ट टाइम 1870 में आपका हिंदू कॉलेज हो रहा है कलकत्ता में, फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड, चार्ल्स वुड डिस्पैच बिल आ रहा है 1854 में, एंड सेटिंग ऑफ द न्यू यूनिवर्सिटी इन कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, यहाँ पर नए नए इंस्टीट्यूशंस बन रहे हैं, इंग्लिश एजुकेशन दिया जा रहा है, वेस्टर्न फिलोसॉफी सिखाई जा रही है। हाँ, and that education, that consciousness was responsible for the awakening of this intellectual. But इसमें भी दो phases हैं.
ऐसा नहीं है कि वो लोग पहले से पढ़ते हुए, जब नया नया इंटेलिजेंसिया निकल रहा है तो वो लोग अगेंस्ट में ब्रिटिश लोग के चले आ रहे हैं. द फर्स्ट फेज of this new intelligentsia, they were very supportive of the British rule. They thought that west look toward the west policy, they adopted this west की तरफ देखो, पश्चिम चलो, हम लोग जाएंगे वहां, फॉरेन में रहेंगे, लंदन में पढ़ेंगे, भद्र लोग होंगे, इंटेलिजेंसिया होंगे. All these things were the part of the first phase. But जैसे जैसे ये बढ़ता गया, the amount of intelligentsia were increased, and the policy of the Britishers at the time, the administrative policy doesn't allow them to acquire this post, the higher post in these administrative offices. इंटेलेक्चुअल बना दे रहे हैं, एजुकेशन दे दिए, लेकिन एट द सेम टाइम उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, वो हाई ऑफिसर क्लरिकल लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं. एट दैट टाइम दैट फ्रस्ट्रेशन वाज गोइंग ऑन, एंड दैट फ्रस्ट्रेशन लीड टू दैट रेजिस्टेंस. वो एक कॉज है. सेकेंड कॉज है कॉन्शियसनेस आना, नेशनलिज्म का कॉन्शियसनेस आ रहा है, नेशनल फीलिंग्स आ रहा है. व्हेन दे आर रीडिंग रूसो, व्हेन दे आर रीडिंग फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, they know about the डेमोक्रेटिक लिबरल रेशनलिज्म क्या है, डेमोक्रेटाइजेशन क्या है, वोटिंग राइट क्या होता है. ऑल दीज थिंग्स दे आर गेटिंग टू नो, एंड दैट इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग. देन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यू विल, जब आप लोग पढ़ोगे कि कैसे प्रेस कैसे हो रहा है, पहले पहले प्रेस हुआ लोगों का इंफॉर्मेशन देने के लिए, बिकॉज वन ऑफ द रीजन ऑफ फेमिन ऑफ 1868 वाज द लैक ऑफ प्रेस. उड़ीसा में कोई प्रेस नहीं था, जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ लोग मरे. सो ये सब चीजें हो रही है, जब जब क्राइसिस हो रहा है, तब फिर प्रेस को ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि लोगों का प्रॉब्लम को ब्रिटिश ऑफिसर जान सके. बट आफ्टर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर मतलब जो रीजनल लैंग्वेज में जो निकलने लगे, बंगाली गुजराती सब अपना अपना रीजनल लैंग्वेज में निकाले, एंड दैट बिकेम द इंस्ट्रूमेंटल फॉर दिस the 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 people of इंडियन, बेसिकली वो अपना अपना ही लैंग्वेज में ब्रिटिश लोगों के अगेंस्ट में उसको लिखने लगे, अबाउट द नेशनलिज्म, अबाउट द इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, ऑल दिस थिंग्स. और जिसमें कि फिर आपका आ रहा है प्रोविंशियल पॉलिटिकल एसोसिएशन. दे आर ऑर्गेनाइजिंग इनटू स्मॉलर ग्रुप, छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट कर रहे हैं. एंड दिस with this the new beginning of the political consciousness era emerged with the Dadabhai Naroji and Ramesh Chandra Dutt, who extremely criticized this economic policy, put forward the drain of wealth theory, and mm, all these stages of colonialism, etc. Why it is happening in 1859? It is beautifully 1850, after 1850. That is beautiful explanation given in your blog. That charter of East India Company was going to expire in 1853. Now they were going to revise it. वो जब एक्सपायर करने वाला था 1853 में, जो चार्टर जो एक्ट था 1853 का, ब्रिटिशर्स वर लुकिंग फॉरवर्ड टू रिवाइज इट, जो कि डिले भी हुआ, बहुत बाद में डिले भी हुआ. एंड ड्यूरिंग दिस रिवीजन द इंडियन टूक दिस चांसेस कि जब ये लोग रिवाइज कर रहे हैं, तब अपना डिमांड को और ज्यादा ज्यादा आगे रखा जाए, ताकि ये लोग जब रिवाइज. प्लीज म्यूट योर सेल्फ दीपिका. What is it? नहीं କରିଛି ତ Deepika, please mute yourself. 1957 1957 21 No, I don't have that option because I am not the host. I am not the host. I am also joining from the. I can't mute them. ମୁଁ ବି ଆଡ୍ ହେଇଛି ବା. Deepika, please mute yourself. What is this? मैडम दीपिका मैडम प्लीज म्यूट करंतु. अरे म्यूट करन नले से जो माइक बटन रे अछि क्लिक करी म्यूट करंतु. I can't mute them because ମୁଁ host କରୁନି, ମୁଁ କରିପାରିବିନି. ना से दीपिका को କରିପାରିବିନି, ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି. ଛାଡ, ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାମ୍. ସମସ୍ତେ ସେୟା, ତମର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ କରି ଚାଲିଛ. ଛାଡ. So this
छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन गुड़ाक क्रिएट ହେଲା ନିଜର when they are forwarding their opinion their ଥିଲା their ମ୍ୟାମ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା ମ୍ୟାମ୍ ଚାର୍ଟର ଆଇନ କେବେ ହେଇଥିଲା please mute yourself first Deepika please mute yourself ନିଜକୁ mute କର Deepika first okay now let me present it okay first let's discuss then we'll go time waste କରିବାନି ବହୁତ ସାରା ଟିକେ 10ଟା slide ଅଛି ମୁଁ ସାରି ଦିଏ ତାପରେ ତମେ question କରିବ then semti there are a lot of small organization was developed like Madras Association Bombay Association it is there in your book ତମେ ସେ blog you can download it you can read it download କରିକି you can read it so British the first association the British Indian Association was found in Calcutta in 1851 formed by Jamidar of the Bengal Bihar and Odisha it but this was the by the jamidars not from the peasant sides and not for the local people voice okay but this was the initiative you can see this is the process and then one by one these things was going on and you have this Indian National Congress they merged all these small association into one group one एक बड़ा group को वो बना रहे हैं एलन ऑक्टिवियन हुम जब वो देख रहे हैं कि बहुत सारे छोटे 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 एसोसिएशन बन रहे हैं they are patronizing this peasant and tribal movement then British thought think that there are two hypotheses regarding this foundation of Indian National Congress one who support that Indian National Congress का एक value था वो डिमांड रखना चाहते थे लोगों का the second is that though these small associations were very impactful ये स्मॉल एसोसिएशन को तोड़ने के लिए ये एक टू इंस्ट्रूमेंट था ब्रिटिशर्स लोगों का ये दोनों ही मिलेगा एक लाइक सुमित सरकार एंड अदर हिस्टोरियंस बिलीव दैट अदर इज लाइक बिपिन चंद्र एंड अदर हिस्टोरियंस बिलीव दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस का वैल्यू है so you can read both of them you can write both them Bipan Chandra and other in their book Indian Struggle of Independence he argued of that for the beginning the Indian national leader understood the basic clash of interest between Indian people and British colonialism. The national movement under the Congress developed a clear-cut anti-colonial ideology. Bipan Chandra बोले नहीं this was not a lie. Indian National Congress का जो फॉर्म होना वो झूठ नहीं था that they put forward they started functioning they started learning how to learn the administrative policies how to put forward their opinion politically कैसे strengthen करोगे एक country को they started realizing that and you can see this political awakening at the beginning in 1860 1870s 1870 के बाद 1880s कैसे ये धीरे 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 emerge कर रहा है they are learning they are writing again and again but there were some lacunas you can sense that forget that idea of economic nationalism strengthening anti-colonial nationalism I have told you that how this economic nationalism like the writing of Dadabhai Naoroji I have collected some information like Indian nationalists explain the drain of wealth theory इसको पूरा समझा है like I have told you that कैसे रेलवे का हो एक्सप्लोटेशन हो ब्रिज बनाना हो रोड बनाना हो through these various investment policies through the commercialization of agriculture how the drain of wealth was going on they explained it then colonialism was based on economic exploitation of India जो जो यूटिलिटेरियंस होते थे उनका जो थ्योरी था कि इंडिया को हम लोग सिविलाइज करेंगे इंडिया को हम लोग डेवलप करेंगे एजुकेशन लाएंगे ये सब चीजें सिर्फ एक टू फेस है एक टू कवर फेस है ऊपर सुपरफिशियल फेस है बट they have this deeper intention which is the exploitation to exploit India and nothing else and Indian wealth was carried abroad the foreign character of the British rule
foreign character means they don't want India to be a developing country. They want to it is as a subordinate, because Rabindranath Tagore has counter attacked this idea of liberalism. कि वो रेशनलिज्म का बात कर रहे हैं, क्रिश्चियनिज्म का बात कर रहे हैं, ब्रिटेन जब क्रिश्चियनाइजेशन का बात कर रहा है कि हम लोग गुड क्रिश्चियन, वी आर गुड क्रिश्चियन, वी आर डूइंग मिशनरीज एक्टिविटीज एंड ऑल दैट. Rabindranath Tagore has said in a quote that आप अगर रेशनलिज्म का बात करते हो तो हाउ कैन यू सपोर्ट दैट कि इंडिया चेन में एक अपना फ्रीडम लॉस करके आप एक कंट्री को अपना रूल करते हो. हाउ कैन यू legitimize that rule by talking about good Christian and religious sentiments and religious benefit, welfare and universal brotherhood? How can you talk about universal brotherhood when you are making a India as a colonial state? So these things were this एक जो कवर अप था दिस इंडियन इंटेलिजेंसिया लाइक टैगोर, विवेकानंद, ये लोग सब चैलेंज किए वो सब थ्योरीज को given by the utilitarian, given by the colonialist. Then the indigenous industry were eliminated. This is the impact of economic exploitation. Machine made British good started using machine made. जो इंडिया का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो रहा है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक डिस्ट्रॉय हो गया. All this explanation was given by these people like Dadabhai Naoroji and Ramesh Chandra Dutt. Indians were forced to act as a cannon fodder in the wars. This is the another cause of the dissatisfaction. British when the Britishers started expanding their territory in Afghanistan and Sindh, afterwards Sindh province and Afghanistan and Burma, Malaysia, you will see that how they are using the Indian soldiers basically for this foreign expansion. आप अगर एक ब्लॉक है सेपरेटली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर का जो एक्सटेंशन है ब्रिटेन का, एंड आफ्टर इंडिया के बाद वो लोग नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर या बर्मा या नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर को जो ऑक्यूपाई किए, दे यूज्ड इंडियन सोल्जर फॉर दिस पर्पस. सो दैट वाज द सो इंडिया का कॉलोनी का हर एक रिसोर्स को यूज करना, फ्रॉम द एग्रीकल्चर, फ्रॉम इंडस्ट्री, पीपल, infrastructure, everything was NRB, everything was used, exploited by the Britishers. And that things came in with these books of Naroji and Dutt. Indian peasants were intensely exploited by the unbending colonial revenue policy. The revenue, you know that Odisha में temporary settlement था 68 तक, आपका परमानेंट सेटलमेंट के अंदर में ही नहीं आया था ये. इवन परमानेंट सेटलमेंट वाज देयर फॉर बिहार, बंगाल, उड़ीसा प्रोविंस, बट उड़ीसा में वो लोग विन करने के बाद भी 70 तक आपका वो टेम्परेरी सेटलमेंट में चलाते रहे, उसको 5 ईयर 10 ईयर सेटलमेंट को इंक्रीज करते रहे. एंड एवरी वो जो एक्सटेंड करते थे, 3 ईयर सेटलमेंट 5 ईयर हुआ, 5 ईयर को 10 ईयर किए, 10 ईयर को 50 ईयर टेम्परेरी सेटलमेंट किए. एंड ऑल दिस सेटलमेंट में वो लोग हर साल लैक्स ऑफ रुपीस बढ़ा देते थे रेवेन्यू का, बट टेंटेटिवली एजम्पशन करके. वो तो दे वर नॉट बॉदर कि वो लोग पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. यू कैन रीड दैट एज वेल दैट व्हाट वाज द नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन सेपरेटली. And this is the this I borrowed from your blog, one of the Frederick List explanation of their nationalism. Like one could argue कि ब्रिटेन में भी तो नेशनलिज्म था, फ्रांस में भी नेशनलिज्म था, वो लोग भी अपना फाइट कर रहे थे, लिबरलिज्म था. हाउ दे सपोर्टेड दिस कैपिटलिस्ट कॉलोनियल थ्योरी. देयर उनका जो नेशनलिज्म व्यू था, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ फेडरिक लिस्ट एक्सप्लेनेशन, कि वो नेशनलिज्म को कैसे देखते हैं उनके हिसाब से. एंड ही इज एक्सप्लेनिंग, यू कैन सेंस दिस, आप उसको देख के समझ सकते हो कि कैसे उनका नेशनलिज्म का इशू कैसे था. देखो, फॉर अदर कंट्री, ही इज राइटिंग, फॉर अदर कंट्री मीन एशियन अफ्रीकन कंट्री which he called the torrid zone of the world, such as Asian and African country, he believed that the idea of infant industry protection was irrelevant because such country were destined to be colonized. वो लेजिटिमाइज कर रहे हैं कि ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है, एशिया एंड अफ्रीका, दे आर दी टोरिड जोन ऑफ द वर्ल्ड, दे आर दी अंडर डेवलप्ड, दे आर, उनका पॉलिसी इतना अच्छा नहीं है, तो वो बेटर होगा, वो लोग उनका इरिलेवेंट है, उनका जो इंडस्ट्री है वो इतने, वो अभी चाइल्ड है, इन्फेंट है, वो लोग अभी उनका अच्छा इसी में ही होगा कि वो एक टू कॉलोनियल होके, कॉलोनाइज्ड होके रहे अंडर दिस
British or the other cosmopolitan metropolis cities. But the Indian nationalism like Dadabhai Naroji, Ramesh Chandra Dutt, Gopal Krishna Gokhale, G. Subramaniam Marian, I have it is there in your blog. Bal Gangadhar Tilak, Surendranath Banerjee. This important book you can write that like Property and Un-British Rule of India by Dadabhai Naroji and The Economic History of India by Ramesh Chandra Dutt. This is the two best example to explain this train of theory and the economic nationalism. Now the next chapter I will quickly go because time is short. The another unit which is dealing with your intellectual and social position. You can read about that how the intellectual Indian intellectual जो थे जैसे कि आपका नील दर्पण जो लिखे हैं दत्त उनका बुक या बंकिम चंद्र का आनंद मठ दयानंद सरस्वती वर्क और स्वामी विवेकानंद का जो वर्क है दीज आर दी अदर स्पेयर एक था इकोनॉमिक स्पेयर ये था इंटेलेक्चुअल सोशल ओपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म कि हमारा सिविलाइजेशन डिग्रेड नहीं है हमारा सिविलाइजेशन बैकवर्ड नहीं है कल्चरल कितना ये है रविन्द्रनाथ टैगोर भी उसमें आएंगे दिस इज द पार्ट ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म इकोनॉमिक नेशनलिज्म दिस इज द पार्ट ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म होमी के भाभा है फेमस क्रिटिक आपका जो नेशनलिज्म को समझने के लिए दीज आर द टू पोस्ट कॉलोनियलिस्ट थ्योरिस्ट होमी के भाभा एंड पार्थ चटर्जी का आपको बताया भी था ये दोनों का काम बहुत अच्छा है यू कैन रीड देम यू कैन रीड देयर रिव्यूज और जर्नल in his conceptual fortification of the domestic space he is saying that पार्थ चटर्जी is saying that ये जो colonial impact था ये हाउसहोल्ड में नहीं हो पाया क्योंकि ये इकोनॉमिक तक रहा बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव तक रहा जो आपका होम है जो डोमेस्टिक लाइफ है फैमिली लाइफ है ये जैसा कि था वैसे मैंने इट इज नॉट क्वाइट इतना चेंज नहीं हुआ वो जैसे प्राइवेसी आपका था जैसे आप रिचुअल्स करते थे so the mimicry was there mimicry means democratic idea liberal का idea nationalism का idea we are mimicking their concept western ka concept but it's at the same time we have our own value our own tradition rituals we never left it so that Partha Chatterjee is saying the spiritual and moral domain of our nationalism that nationalism to hai we are talking about equality we are talking about socialism we are talking about rights human right but at the same time we have reservation we have different article we have marriage law of different religion हम लोग सबका religion का सबका sentiment का रख के उसको किए so that is the spiritual and moral domain of Indian nationalism that quickly I will go to the emergence of unified nationalist movement in form of Swadeshi this is your 8th unit you can write about this Swadeshi movement after the Bengal का जो 1905 का division हो रहा है by the Lord Curzon and the rise of extremism राइज कैसे कर रहा है उसका भी डिफरेंट थ्योरी आपका ब्लॉक में दिया है द फर्स्ट इज अबाउट द फ्रैक्शन राइवलरी जो हो रहा है मतलब जो ये नए इंटेलिजेंशिया जो क्रिएट हो रहे हैं उनमें भी राइवलरी है नॉट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स बट उनके खुद के आइडियोलॉजी में जैसे कि राइवलरी बिटवीन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी वन हैंड एंड रेडिकल मोतीलाल घोष on the other fraction between Aurobindo Ghosh on one hand and Bipan Chandra Pal another side. In Maharashtra, competition between Gokhale and Tilak for controlling Purna Sarvajik Sabha. This fraction was also lead to the emergence of extremist movement. The second theory is the Congress का जो moderate leaders थे उनका failure. They didn't create any strong voice for the Indians. अगर वॉइस होता तो पार्टीशन होता सो वट एवर देयर पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपन इन 1905 कर्जन का मेन पॉइंट ये था कि जो कि बंगाल बिहार उड़ीसा ये एक बहुत बड़ा प्रोविंस हो जा रहा है उसको डिवाइड करना है दैट इज द इन द न्यूज the second aspect of this Karjan policy was that Karjan wanted to break this the Bhadralok influence in Bengal ये जो न्यू इंटेलिजेंस हुआ न्यू एरिस्टोक्रेटिक क्रिएट हुए बंगाल में भद्रलोक बोला गया उनको बुक में अपने वो लोग लैंड ऑनर थे मनी लैंडर्स थे प्रोफेशनल थे वो लोग अपर कास्ट के ही थे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड वो लोग अपने अपने में ग्रुप बना ले रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स टू पुट फॉरवर्ड देयर डिमांड एंड दैट क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर द कर्जन एंड देन ही डिसाइडेड टू फॉर द डिवीजन ऑफ दिस बंगाल एंड how the Bengal partition was cause for the Swadeshi movement जो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट हो रहा है वहां पर क्षत्रिय वुड आर्यन पास्ट
उस समय आर्यन जो इन्वेजन का आपका आर्यन का बुक लिख रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री का बुक लिखा जा रहा है। एंड ही द शिवाजी फेस्टिवल रिवाइव कर रहा है, बॉय कटिंग फॉरेन गुड्स, ऑफिसेस को छोड़ना, ये जो जो स्वदेशी मूवमेंट का जो कोर्स है, यू कैन रीड दैट, आप पढ़े होगे स्वदेशी मूवमेंट का, और भी कई जगह में यूजी में भी पढ़े होगे दैट स्वदेशी मूवमेंट में कैसे वो बाल गंगाधर तिलक वो सुबह नदी से नहा के वो जो श्लोक गा रहे हैं, वंदे मातरम का उच्चारण हो रहा है, द डे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ ब्लैक डे फॉर द बंगाल, लाइक दिस। कोर्स थोड़ा सा उसको आप पढ़ लेना। कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी एंड द डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस लाइक रेवोल्यूशनरी फोर्सेस। कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी मतलब uh, अब अगर आप चाहते हो कि कुछ इंडिजीनियस हो जो आपके नेशन का बना हो, तो आपको उस हिसाब से फॉर्मेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल केमिकल फैक्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल रविन्द्रनाथ टैगोर के जो बड़े भाई थे, ही स्टार्टेड ए बैंक इन इंडिया फॉर द इंडियन पीपल, लेकिन वो बैंक भी डूब गया बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट, बट that was also a initiative taken by these people, the constructive Swadeshi. The Swadeshi influenced Vivekananda idea of alternative cleanliness, जिसमें वो कंबाइन कर रहे हैं मॉडर्निटी का कॉन्सेप्ट को भी और ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल सेलिब्रेशन का भी हमारे साथ रहेगा। तो ये इसको भी इंटेलेक्चुअल लेवल में। देन योर ऑर्गेनाइजेशन, बंगाल केमिकल फैक्ट्री, पोर्सिलिन फैक्ट्री सब हुआ, बैंक हुए कुछ इंडिया जो बंगाली रिच पीपल थे वो लोगों ने अपना अपना बैंक खोले, कुछ इंडस्ट्रीज भी हुए। द नेशनल एजुकेशन मूवमेंट वाज लेड बाय सतीश चंद्र मुखर्जी। देयर आर अदर सरस्वती आयतन, रविन्द्रनाथ टैगोर फाउंडेड आश्रम इन शांति निकेतन। दीज आर दी कंस्ट्रक्टिव स्वदेशी मूवमेंट, जिसमें एजुकेशन दिया जाएगा, इंटेलेक्चुअल का बात किया गया, मोरल फिलोसफी का बात किया गया, टू स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ स्वदेशी माने खुद का, द आइडिया ऑफ ओन नेशन, that we have the consciousness, we can create, we can rule, because ये एक टू पॉलिसी, ये एक नेशनल मॉडरेट लीडर का ये आइडिया था कि इंडिया का लोगों का जो पॉलिटिकल लीडर है उनका एक क्रिएट करने का, नेशन क्रिएट करने का अभी तक एलिजिबिलिटी नहीं हुआ है। दे हैव टू लर्न फ्रॉम द ब्रिटिशर हाउ टू रूल देयर नेशन, विच वाज चैलेंज बाय दिस पीपल कि हमारा इतना फिलोसफी, इतना ये है, हम लोग किसी से पीछे नहीं है। Then the second phase of this extremism is revolutionary terrorism. In 1908, political extremism declined, and that was followed by a more radical phase of revolutionary terrorism. You know the name of Aurobindo Ghosh and Khudiram Bose. These are the people जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए या मर्डर्स हुए, assassinations के प्रोग्राम हुए कि we can we can fight for our own freedom, and we don't need to formulate policy and negotiate with the Britishers. They were extremely um, revolutionary in nature. The Congress in 1908, known as Mehta Congress, was only attended by the moderates. 1907 से 8 तक बाल गंगाधर तिलक and even your Bipan Chandra, sorry, Lala Lajpat Rai, Bipan Chandra Pal, they uh, try to reform the Congress. वो एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट दोनों को बुला के समझौता कराना चाहते थे, बट इट वाज फेल्ड। ये बहुत ही ज्यादा स्प्लिट हो गया। एंड 1908 में जो कांग्रेस हुआ, इट वाज ओनली अटेंडेड बाय द मॉडरेट, एंड एट द टाइम तिलक डायड और अरविंद टूक ऑफ लाइफ ऑफ ए हर्मिट। सो दिस टू फ्रैक्शन, ये पूरा रेवोल्यूशनरी का एक अलग फ्रैक्शन रहा और आपका मॉडरेट का एक अलग फ्रैक्शन रहा। ये चलता रहा टिल 1920 तक, when Gandhi came. Only in the time of Gandhi non-cooperation movement, all the people came together, even the Muslim League. The revolutionary movement in Bengal, I have given some example. It is there in your block, in the last block. The first such outfit of Midnapur Society, ये सब revolutionary group है. Midnapur Society, which is founded in 1902. Then gymnasium by Ballygunge Circle Road by the Sarla Ghosh, एक gymnasium बना। वही सब revolutionaries idea, training देना, fight करना, assassination कैसे करेंगे officers लोगों को। March 1902, Dhaka Anushila Samiti was founded by Satish Chandra Basu. This is another example. 1902, after Bengal divide, it became more prominent. Extremism is turned in the nature of revolutionarism. In August 1906, the first Swadeshi Dakayat were organized in Rangpur to raise fund, and bomb manufacturing unit was set up in Manikatla at Calcutta. बॉम्ब बनाना स्टार्ट कर दिए।
वन अदर, जैसे कि भगत सिंह का आप जानते हो, ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी। वो लोगन और पॉलिसीज के थ्रो पे इंडिया को इंडिपेंडेंट नहीं चाहते थे। They made it clean plan to assassinate offensive oppressive officers, spies, and commit burglary in the houses of wealthy Shah merchant who had earlier refused to stop dealing with the foreign good. शाह मर्चेंट जो ट्रेडर्स कम्युनिटी होते थे, वो लोग भी कैपिटलिज्म को प्रमोट करते थे बिकॉज ऑफ द वेल्थ एंड इकोनॉमी, कॉमर्स के लिए। तो दे रिफ्यूज टू सपोर्ट द बॉयकटिंग दिस फॉरेन गुड। एट दैट टाइम उनको भी अटैक करना, अटैक ऑन द लाइफ ऑफ प्रेसिडेंट मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड ऑन April 30, 1908 एट मुजफ्फरपुर बाय खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चाकी। अरविंद घोष का नाम भी है, आप जानते हो, रेवोल्यूशनरी में। वरिंद्र कुमार घोष वर अरेस्टेड बाय पुलिस फॉर एनकरेजिंग टेररिस्ट एक्टिविटी। उनको टेररिस्ट बोल के ब्रिटिश का हिस्ट्री में लिखा गया। इवन भगत सिंह को भी, बिकॉज दे फॉट इन अ डिफरेंट वे, देयर आइडियोलॉजीज वर डिफरेंट। इट इज नॉट दैट दे कोई नेगोशिएट कर रहा है, कोई मॉडरेट, एक्सट्रीमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी, ये तीनों का आइडियोलॉजी का डिफरेंसेस है। That's all. That's all. I'm stop sharing. I will take the questions for 5 minutes. Then we can continue. Okay. Sorry for this. I have to go quick because एक यूनिट में मुझे 4 ब्लॉक को जस्ट आपको थोड़ा रिव्यू देना है, ताकि आप थोड़ा ओवरव्यू समझ जाओगे, तो फिर देन यू कैन रीड बाय योर सेल्फ. ओके. So you have quick a questions or 1 or 2 question I will take quickly, very quickly. मैम चैप्टर एंड कब हुआ था? हाँ? चैप्टर एंड कब हुआ था? Charter Act, there are various Charter Act. You can read a separate block which is there, administrative policy का जो development है, that Charter Acts of 1930, 1774, then 1813, 1830 का लैप्स किया 1835 में, 35 से फिर 1852, 52, फिर 59, ऐसे करके अलग अलग चार्टर एक्ट है. यू कैन रीड दैट अबाउट दैट. 1830 में आपका फ्री ट्रेड पॉलिसी आ रहा है, दैट चार्टर एक्ट ऑफ, जिसमें पहला स्टेज का कॉलोनियलिज्म से सेकंड स्टेज में जा रहा है. थैंक यू। Which movement मैम should we the जो first national कंस्ट्रक्टिव movement for स्वादिष्ट independence? था मूवमेंट, तो इसका एक मेन मोटो था कि मतलब यस one by one. Ajit, yes, go on. Ajit, yes, please. जो कंस्ट्रक्टिव स्वादिष्ट जो मूवमेंट था, तो इसका मेन मोटो था कि मतलब किसी लोगों को ट्रेंड करना और उसको शिक्षा देना, यही था. हाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल शांति निकेतन एस्टेब्लिश्ड हुआ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, देयर आर वेरियस. जब ये लोग बॉयकट करो बोल रहे हैं, जब स्टूडेंट लोगों को, आप जैसे स्टूडेंट अभी इंस्टीट्यूशन छोड़ दोगे तो आप लोग पढ़ोगे कहाँ पर? तब ये लोग फिर इंडिजिनियस स्कूल सब क्रिएट कर रहे हैं. ये जो न्यू लीडर्स लोग हैं, ये लोग अपना अपना एक स्कूल कर रहे हैं ताकि ये बच्चों लोग को एकोमोडेट कर सके, जो लोग बॉयकट किए हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट को, फॉरेन नॉलेज सिस्टम को. फॉरेन, आप अगर क्लॉथ छोड़ोगे तो अपना क्लॉथ पहनोगे ना, तो फिर खादी मैन्युफैक्चरिंग होगा. यस आप अगर फॉरेन शूज छोड़ोगे तो खुद का शूज पहनोगे कि नहीं? तो फिर खुद का नहीं, अगर खुद का मैन्युफैक्चर नहीं करोगे तो फॉरेन को छोड़ोगे कैसे? तो ऑप्शन देना पड़ता है. तो दैट इज द कंस्ट्रक्टिव फेज, जहां पर केमिकल फैक्ट्री होगा, टेक्सटाइल फैक्ट्री होगा, प्रेस होगा, खुद का आपका खुद का इंस्टीट्यूशन होगा. दैट इज द थिंग. दोनों साइड से होता है ओके. ना. तो मतलब यस. या यस पतित. मतलब ये हुआ कि मतलब हम लोग जब उसका फॉरेन जो भी गुड्स थे उसको हम लोग जब अवॉइड कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग को खुद से कुछ प्रोडक्ट ये तो करना पड़ेगा. So तो these are यही the था उसका example मोटो. which I gave you. पोर्सिलिन जैसे फैक्ट्री हुआ, बेंगल केमिकल फैक्ट्रीज इज वन ऑफ द, शांति निकेतन का इंस्टीट्यूशन इज अनदर एग्जांपल. देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल इन योर बुक, और भी एग्जांपल्स हैं. ओके. ओके. ओके मैम, वन मोर जैसे क्वेश्चन. कि एक बैंक भी आपको बताया, एक बैंक भी रविन्द्रनाथ टैगोर के जो अंकल थे, ही स्टार्टेड ए बैंक, वो लोगों के लिए, इंडियन लोगों के लिए, ताकि इंटरेस्ट कम, क्योंकि ब्रिटिश बैंक लोग में पैसे देने से आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ता था. तो वो जो कुछ हाँ. कुछ इंटेलिजेंशिया बंगाल के, वो लोग एक बैंक भी स्टार्ट किए थे, लेकिन वो फिर दिवालिया हो गया क्योंकि ब्रिटिश सपोर्ट नहीं मिला उनको. तो गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं रहेगा तो एक वन बैंक कैसे चलेगा? चलेगा? या one more question, ma'am. That what were the causes that hundreds of peasant and tribal were came out for a movement?
There are a lot of reasons. First is you have to understand the difference between peasant and tribal movement. इसके लिए बेस्ट बुक है जो Yeah. फ्रीडम स्ट्रगल की जो बुक है विपान चंद्रा की, देयर इज ए सेपरेट चैप्टर पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट। ये दोनों का नेचर अलग है, पीजेंट का अलग है, ट्राइबल का। ट्राइबल एक एक बेसिक खाली एक स्मॉल एक आपको दे देती हूँ। ट्राइबल डायरेक्टली चैलेंज किए थे ब्रिटिशर्स लोगों को, और जो पीजेंट थे, पीजेंट लोगन बहुत थोड़ा सा दे डिडंट चैलेंज द ब्रिटिशर डायरेक्टली। वो लोगन जमींदार लोगों के अगेंस्ट में बोले। वो लोग बोले कि जो नए जमींदार से न्यू जमींदार जो रिप्लेस हो गए, रिप्लेस कर दिए, ये लोगन बहुत एक्सप्लोटेटिव है। वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिशर, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट द जमींदार। तो इसीलिए जो ब्रिटिशर्स थे वो लोग डायरेक्ट पीजेंट लोगों को मार नहीं पाए, लेकिन ब्रिटिशर्स दे रूथलेसली सप्रेस दिस ट्राइबल रिवोल्ट, क्योंकि ट्राइबल लोगन दे वर नॉट अवेयर ऑफ दिस पॉलिटिक्स, कि कैसे फाइल केस करना है, कैसे पिटिशन देना है, वो सब नहीं। दे जस्ट स्टार्टेड फाइटिंग सांथाल मुंडा रिबेलियन। यू कैन सी, यू कैन रीड देयर द वेरियस रीजंस ऑफ देयर, जो ये लोगों को जो एलिवेट कर दिया गया पोजीशन। आप एक ट्राइबल एरिया में जाओगे, वहां पर एक लीडर को आप एलिवेट कर दोगे, आप बोलोगे तू जमींदार है एंड यू हैव टू पे द टैक्सेस इक्वल टू द जमींदार, तो क्या होगा? तो वो प्रॉब्लम था ट्राइबल मूवमेंट का। पीजेंट मूवमेंट का सेपरेट प्रॉब्लम है जो रेवेन्यू पॉलिसी। ओके, या Okay. नेक्स्ट, एनीवन एल्स? मैम अगर हिंदी में वो 1-2 मिनट में स्टोरी को समझा देते तो अच्छा होता। Patit was asking me a question. Patit, please ask me a question. Language के ऊपर don't please. I've tried to. You have to comfortable. You have to be cope with the system. Patit, yes, ask me a question just quickly. Yes, ma'am. Which movement should we call the first actual national movement for independence? Is it the? There is nothing called actual, because if you are talking about actual, then you are talking about in binary. हिस्ट्री में बाइनरी जैसा कुछ नहीं है, अच्छा बुरा या फर्स्ट और लास्ट। अगर एक पाइको रिवेलियन हो रहा है, दैट मीन वो कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है वो एरिया में। ऐसे बोलोगे तो वो जो ये जो फर्स्ट होना सेकंड होना, ये सिस्टम बहुत पुराना है, ये थ्योरी ही पुरानी है। तो क्या आपको रीजनल डेवलपमेंट भी देखना पड़ेगा, वो कैसे फिर 8057 को ये कर रहा है, फिर 8057 का भी इम्पैक्ट हो रहा है। ये सब कलेक्टिव है, एक एक एक्सपीरियंस होता जाता है, एक्सपीरियंस से फिर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसे तो आप 1935 का भी जो उड़ीसा का है, उड़ीसन पीपल आर वेलकमिंग सैमन कमीशन, दे आर नॉट सपोर्टिंग दैट। मधुसूदन दास बोलते ही थे कि गोपबंधु दास और मधुसूदन दास का कॉन्फ्लिक्ट ही इसी बीच में था, दैट गोपबंधु दास वाज टॉकिंग अबाउट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। मधुसूदन दास बोले कि हम लोग कांग्रेस का नहीं जाएंगे, कांग्रेस तो हमारी बात सुनता ही नहीं है, हम लोग अपना प्रोविंशियल कमीशन एसोसिएशन करेंगे। तो रीजन भी है और नेशनल भी है, यू हैव टू सी द बोथ द पॉलिटिक्स। आप रीजन को अवॉइड नहीं कर सकते, ना ही आप नेशन को अवॉइड कर सकते हो। ओके Ma'am, what are the reasons behind the Bengal petition? बेंगल पटिशन, आई हैव टोल्ड यू दैट 1905 में जो कर्जन का जो पॉलिसीज था, द पॉलिसी वाज बेस्ड ऑन दैट द थ्योरी दैट ये जो भद्र लोग हैं, जो अरिस्टोक्रेट जो फैमिली एमर्ज कर रहे हैं, जो लैंड ओनर, जो लार्ज लैंड ओनर, ये लोग हाई पोजीशन में है, रीच है, ये लोगों का इन्फ्लुएंस है कॉमन लोकल लोगों में, लैंग्वेज जानते हैं, वर्नाकुलर प्रेस को यूज कर रहे हैं ना, ये लोग बहुत ज्यादा धीरे धीरे पावरफुल होने लग गए। ये जो बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, जिसमें आसाम भी था, बंगाल भी था, उड़ीसा भी था, बिहार भी था, कर्जन बोले कि वी आर अनेबल टू एडमिनिस्ट्रेटेड दिस लार्ज प्रोविंस फर्स्ट। द सेकेंड, ये जो भद्र लोग हैं, ये लोग का यूनिटी को तोड़ने के लिए भी बंगाल का डिवीजन किया गया, जिसमें कम्युनल भी एक एस्पेक्ट है, हिंदू मुस्लिम का इशू को उठाना, कि ईस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, वेस्ट बंगाल में कम हिंदू है, तो वो रिलीजन के बेसिस पे इसको डिवीजन कर लो। सो देयर आर 3-4 एस्पेक्ट ऑफ दिस, लेकिन मेन इसमें यही होता है कि कैसे यूनिटी को ब्रेक किया जाए। ओके जी मैम, थैंक यू मैम। मैम, ये जो कल्चरल आइडियोलॉजी था कॉलोनियल मिलियो का, उसका लिमिटेशंस क्या था, फिर से थोड़ा बता देंगे? लिमिटेशन, मैंने बोला कि नेशनलिज्म का बहुत सारा एस्पेक्ट है, जैसे इकोनॉमिक नेशनलिज्म एक है, दादा भाई नारोजी, रमेश चंद्र दत्त, दे शो दिस फेसेस ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन। कल्चरल नेशनलिज्म, जैसे कि विवेकानंद, आपका रविन्द्रनाथ टैगोर, इवन महात्मा गांधी, हु ब्रॉट दिस नॉन वायलेंस कॉन्सेप्ट फ्रॉम द बुद्धिज्म, उसको लाके वो वेस्ट को सिखा रहे हैं। तो दीज आर द कंस्ट्रक्टिव कल्चरल एंड सोशल। राजा राम मोहन राय का आर्य समाज, ब्राह्मो समाज, दयानंद सरस्वती,
ये सब है सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स सब करना। तो ये कल्चरल पार्ट को दिखाना, ये सब, ये एक फेज है, ये एक सिस्टम है। दूसरा है पॉलिटिकल, जब आ जाएगा पॉलिटिकल नेशनलिज्म 1950 के बाद आ रहा है, जब वोटिंग के लिए आप नेशन को यूज करोगे, जब आप लोगों से वोट के लिए नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट आएगा, दैट इज पॉलिटिकल नेशनलिज्म, वो बहुत बाद में आ रहे हैं। जो आप जब यर्ली नेशनलिज्म, इंडिया का नेशनलिज्म ब्रिटिशर्स के टाइम में पढ़ोगे, तो दिस टू नेशनलिज्म इज important. One is your economic nationalism, जिसमें दादा भाई नौरोजी रमेश चंद्र British entrepreneur, and the second is your cultural nationalism by and social and cultural nationalism. Okay. जी रविन्द्रनाथ टैगोर सब थ्योरी लिख रहे हैं, वो इसलिए नहीं लिख रहे हैं कि मैं पॉलिटिक्स जीत जाऊं, कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, कि मैं ये कर जाऊं। वो दिखा रहे हैं वो एशिया कैसे एमर्ज करेगा एक पावरफुल नेशन में। And when Vivekananda is speaking all over world about the Indian Vedantic system, he is not talking about politics कि मैं कैसे एक लीडर बन जाऊं। था क्या विवेकानंद का तो पॉलिसी में नहीं था कि मैं एक लीडर बन जाऊं, कि मैं एक पॉलिटिकल लीडर, लोग मेरे को वोट दें, उसीलिए नहीं था। सो दैट द नेचर ऑफ दैट नेशनलिज्म, दैट फीलिंग वाज डिफरेंट from the political nationalism, which is after 1950 you can see. जी जी Okay. Ma'am, Yeah, ma'am, what yeah. is drain of wealth? ड्रेन ऑफ वेल्थ, पूरा क्लास चला गया आपका, ड्रेन ऑफ वेल्थ पूछ रहे हो आप। ड्रेन ऑफ वेल्थ मतलब जो यहाँ से जो मनी आपका चला जाता था, जो जो भी रिसोर्सेस है, एक्सप्लोइटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन होता था इंडिया का, और जो भी किस तरीके से जाता था, जो सिस्टम है, जो चैनल है, दैट चैनल डिफाइंड एज ए ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि किस चैनल से आपका जो रिसोर्सेस है, जो मटेरियल है, वो जा रहा है यूरोप की तरफ, डाइवर्ट हो रहा है, कैसे ब्रिटेन के पॉकेट में जा रहा है। ओके, इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन का नेचर क्या क्या है, जिसमें से कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक है, फ्री ट्रेड एक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी जो होता था, जिसमें 0% टैक्स लगता था, वो लोग जब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन आप अगर जब कोई चीज को इम्पोर्ट करोगे तो उसमें हर जगह वो लोग टैक्स लगाते थे। So through the taxation policy, how they exploited India. That is the main nature of drain of wealth. Okay. Okay, thank you. Okay. See you in next class with the next unit. Okay. आप थोड़ा पढ़ के आ रहे हैं ना, we'll discuss it. मैम Yeah. वो असाइनमेंट कैसे लिखेंगे, थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में। असाइनमेंट कैसे, मैंने असाइनमेंट को ये पेपर का जी वो क्या हुआ कि अदर अदर टीचर्स के अदर अदर व्यू होते हैं। कौन बोलता है इंट्रोडक्शन पहले लिखो, कौन बोलता है ऑब्जेक्टिव पहले लिखो। नहीं, इंट्रोडक्शन पहले ही होगा ना, क्योंकि वो इंट्रो है, आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, तो इंट्रोडक्शन तो सबसे पहले ही होगा ऑब्वियसली। इंट्रोडक्शन मैम का नेक्स्ट वर्ड का क्लास में मतलब ही होता है इंट्रोड्यूस करना। आप जी इंट्रो जी लिख रहे हो, या फिर आप सेकंड कुछ और दूसरा कंटेंट लिखो अगर ऑलरेडी, तो उसका तो जी मतलब वही जी होता है, फ्रंट पे लिखना हो गया। तो इंट्रोडक्शन एंड जी बोलिए बोलिए। इंट्रोडक्शन में ही ऑब्जेक्टिव आ जाता है। जी हाँ, उसके अंदर ही ऑब्जेक्टिव आ जाता है। ठीक है, फिर एनालिसिस, फिर कंक्लूजन। एनालिसिस एंड कंक्लूजन आपका आप लोगों का असाइनमेंट, सॉरी मुझे नहीं मालूम उसके बारे में, मैं पूछ के बता सकती हूँ, लेकिन चूंकि मुझे सिर्फ क्लास लेने के लिए बोला गया था। असाइनमेंट आप जो भी टॉपिक पे लिखोगे, पीजी का जो भी असाइनमेंट है हम जैसे लिखते हैं, देख लेना, प्रिंट आउट निकलवा लेना सामने का फ्रंट पेज, और उसके बाद अच्छे से लिख के देना, और किसी कोई क्लास प्रॉब्लम में नहीं है। डिस्कशन थोड़ा कर लेंगे कि कैसे लिखते हैं। क्योंकि हमारा जो फर्स्ट ईयर था वहाँ जो 3-4 टीचर्स थे उनके अदर अलग अलग व्यू था, इसलिए मैं पूछ रही थी नहीं, आपके ऐसा कुछ केस नहीं है, आप पहले इंट्रोडक्शन ही लिखना। जी इंट्रोडक्शन में और भी एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि फिर आप कुछ जो उसका जो इंट्रोडक्शन मतलब आप समरी दे रहे हो, एक तो क्या करना चाहते हो, क्या काम क्या लिख रहे हो, फिर आप जी उसमें प्रोसेस लिख सकते हो, एनालिसिस कर सकते हो, जिसमें वेरियस, अगर मान लो कोई एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल 1857 रिवोल्ट है, तो आप उसमें एक तो फर्स्ट इंट्रोडक्शन दे देना। जी फिर आप क्या बोलना चाहते हो वो भी हो जाएगा, कि आप क्या 1857 रिवोल्ट का क्या इसमें ला रहे हो, आप कोर्स को ला रहे हो, कॉजेस को ला रहे हो, आप 1857 फर्स्ट वाला ऑफ इंडिपेंडेंट नहीं था या था, उसको डिबेट को ला रहे हो, 1857 का कौन सा एस्पेक्ट को आप डिस्क्राइब करना चाहते हो, वो ऑब्जेक्टिव में लिख देना।
फिर एनालिसिस कर देना उसको, जो भी आप प्रूफ करना चाहते हो कि ये राइटर ये बोले, वो राइटर ये बोले, चाहे नेक्स्ट राइटर ये बोले, पूरा आ जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा, लास्ट में डिफरेंस देखिए खत्म हो जाएगा, डिफरेंस देखिए, ओके। ठीक है, कंक्लूजन के बाद एंड कर देंगे तो? हाँ, रेफरेंस आई थिंक देते हैं, रेफरेंस बोले थे देखने के लिए फर्स्ट टाइम में। नहीं नहीं, रेफरेंस नहीं बोले थे, ओके ठीक है। बोल देते कंक्लूजन लिखना, नहीं तो लेट अस सम अप लिख देना। इन नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट द सेकंड थर्ड यूनिट, जो आपका थर्ड यूनिट है, इसके बाद का नेक्स्ट यूनिट है वो है MH9 का थर्ड ठीक यूनिट है है, वो मैम, डिस्कस करेंगे, ओके या। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। Yeah, I'm ending the meeting from my side. Okay. Okay. रिकू अच्छा में रिकू म्यूट ऑफ करो। Yeah. हेलो